In today's lecture, it will be about skeletal muscle. Skeletal muscle is one of the third type of muscles. Usually, there are the three types of the muscles: skeletal muscle, smooth muscle, and the third one is the cardiac muscle. In this lecture, we will discuss about the functions, properties, and the structure of the cardiac muscle. First of all, we see the location. This skeletal muscle, it makes the walls of the heart. Heart is one of the special organ. It is considered the vital organ in the human body, and it makes the walls of the heart. This cardiac muscle is present in heart only. As we know that जो मसल टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यू है, having said that half of the body's weight, जिसको weight बोलते हो आप, that is the mass, जो half of the body's mass जो है, half of the body's bulk जो है, that is made up of the muscular tissue, regardless of whether it is smooth muscle, whether it is skeletal muscle. Among them, the cardiac muscle is special muscle. This muscle is the special muscle from rest of the two muscles, from the skeletal muscle, from the smooth muscle. This cardiac muscle is the special muscle, special type of the muscle, because this special muscle, this cardiac muscle, has the special function, and it has the constant function throughout one's life. That is why it is special. It has a special function. We see that the heart is a special organ, and it needs special muscle which can contract continuously, which can contract regularly, which can contract repeatedly. Heart needs that type of the muscle जो ये सारे काम कर सके, and that when it comes at the conclusion, we can say वो muscle जो है, that is the cardiac muscle, which can contract continuously, which can contract regularly, which can contract repeatedly. And that is why it is this cardiac muscle, it is distinguished from rest of the muscle types, from rest of the muscle types. It is distinguished from them. Why it is distinguished? Because जो cardiac muscle है, it can contract continuously, it can contract constantly throughout one's human life. Throughout one's life, it can contract. It contracts regularly and repeatedly without getting fatigue. It contracts. That is why it is distinguished. It is special muscle from rest of the muscle types. Here we have the question that जो skeletal muscle है, skeletal muscle जब continuously काम करता है, I have already told you in the previous lectures कि जो skeletal muscle है, skeletal muscle is when the skeletal muscle works, तो ultimately ये क्या हो जाते हैं, skeletal muscle gets fatigue due to the less mitochondrial enzymes in them. तो that is why वहाँ पे fatigue जो होती है takes place होती है. तो means कि skeletal muscles has property कि that gets fatigue. लेकिन here the question is why cardiac muscle do not gets fatigue? Why? After having said that this cardiac muscle, it contracts regularly, it contracts repeatedly, it contracts even constantly throughout one's life, then why it do not gets fatigue? It is the question here. Why it do not gets fatigue? Having said it contracts continuously. The answer of this question is that because this cardiac muscle, it has much mitochondrial enzymes. जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं, इस कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स ज्यादा होती है. मींस कि टू थिंग्स आर देयर इन ए मच मोर क्वांटिटी. एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है
दूसरा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, because cardiac muscle has more mitochondria and glycogen granules. Mitochondria जो है, as we know that mitochondria is the powerhouse of the cell. The energy it provides the energy to the cardiac muscle. ये लगातार energy provide करता है cardiac muscle को. And second point here is that is the glycogen granules. Glycogen granules जो है, it stores, firstly it's at the initial stage it stores energy, and after that it starts it provides energy to the cardiac muscle, because the cardiac muscle has to contract constantly throughout one's life. That is why, because of the mitochondria and the glycogen granules, because of these two things, because of these two causes, the cardiac muscle does not get fatigue. It does not get fatigue after having it has contract regularly, continuously and constantly throughout one's life, because there is much more quantity of the mitochondria and the glycogen granules. That is why we can come to know that the notable point here is this cardiac muscle is also called the fatigueless muscle. This muscle is called the fatigueless muscle. Why it is called fatigueless muscle? Because of these two things. There is the much more quantity of these two things, and they continuously provide the energy to the muscles for the contraction. And it, as we know, that it contracts continuously, it contracts constantly throughout one's life. That is why it is called the fatigueless muscle. And now we will see that the shape of the cardiac muscle. When it comes to the shape, जब हम शेप की बात करेंगे, the cardiac muscle is elongated. The shape of the muscle cells of the cardiac muscle जो है, they are elongated. They are having the elongated shape. They are spindle shaped and are branched. ये जो cardiac muscles हैं, ये branched होते हैं, ये elongated होते हैं. They are often branched. ये often branched होते हैं. Like this. ये ब्रांचेड होते हैं, ये वाले. They are branched. They are often branched. Firstly, और second, जो ends of the cardiac muscle. I will let you clear with the help of the diagram. एक तो मैं आपको बताऊंगा, इट इज ब्रांचेड. ये कार्डियक मसल है. I will try to make it with a different marker so that it will be easily visible to you people. This is the cardiac muscle. एक तो ये ब्रांचेड है, राइट. ये जो मैंने किया है, ये वाले, ये दे आर ब्रिज ओब्लिक्स. दे आर कॉल्ड द ब्रिज ओब्लिक्स. जो कार्डियक मसल है, ये ब्रांचेड है, ऐसे ही ब्रांचेड है, ऐसे ब्रांचेड है, राइट. सेकंड थिंग,
जो कार्डियक मसल सेल्स के जो एंड्स हैं, दे आर फर्मली बॉन्डेड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ फर्मली बॉन्ड है। ये देख रहे हो ना आप, जो मैंने ब्लू मार्कर से मार्क किया है, ये वाले, ये राइट दिस, ये एक मसल सेल है, ये दूसरी मसल सेल है, ये तीसरी है रेस्पेक्टिवली, ये मसल सेल्स है, ये मसल सेल्स है, ये मसल सेल, ये वाली मसल सेल जो ये इस मसल सेल के साथ फर्मली, द एंड ऑफ दिस कार्डियक मसल सेल इज फर्मली बॉन्डेड टू वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ फर्मली वन अनदर फर्मली बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? विद द हेल्प ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क, जो बॉन्ड बनाता है कार्डियक मसल के बिटवीन सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल जो है, दे आर फर्मली बॉन्डेड टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ द इंटरकलेटेड डिस्क। एक इसको क्या कहते हैं? इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क्स, ये इंटरकलेटेड डिस्क्स हैं, जिस इंटरकलेटेड डिस्क्स किसके साथ, ये कार्डियक मसल जो है, ये मसल सेल्स जो हैं, ये एक इनके एंड्स जो हैं, दे आर फर्मली बॉन्डेड टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरकलेटेड डिस्क्स। एंड वन मोर थिंग, ये जो इंटरकलेटेड डिस्क्स हैं, ये वाली जो मैंने बोले हैं आपको, ओब्लिक, ब्रिज ओब्लिक्स हैं, ये इंटरकलेटेड डिस्क्स दे जॉइन, ये जॉइन है दूसरे इसके साथ विद द हेल्प ऑफ दिस oblique, it is called the oblique bridge. This intercalated disc is joined with the other mass that we called the oblique bridge. इसको oblique bridge बोलते हैं, right? And this, there is centrally located nucleus. ये एक single large nucleus है इसमें, जो centrally located. The position of this nucleus is at the center. In the center there is the nucleus, single large nucleus, जो सेंट्रली लोकेट है यहाँ पे, राइट? और उसके बाद व्हेन इट कम्स टू द सिट्रेशंस, अगर हम सिट्रेशंस की बात करेंगे, इसमें अगर हम सिट्रेशंस की बात करेंगे, तो सिट्रेशंस में क्या पता चलेगा हमें कार्डियक मसल जो है, दे आर आल्सो कॉल्ड सिट्रेटेड मसल। व्हाई दिस कार्डियक मसल इज आल्सो कॉल्ड सिट्रेटेड मसल? Like the skeletal muscle is the situated muscle, in the same way cardiac muscle is the situated muscle. But here the difference is, the main difference between these two situations, कि जो skeletal, जो cardiac muscle है, cardiac muscle जो है, ये इनकी भी situations है। When it comes to the situations, when we go through the light of the microscopic examination, जब हम microscopic examination करेंगे cardiac muscle का, तो we can come to know that कि there are light bands and dark bands. There are the light bands of two contractile filaments that we call the actin and the myosin. Actin and myosin जो two contractile filaments हैं, जो two thick and thin filament जो हैं, इनको light and dark band भी बोलते हैं। तो इन्हीं की वजह से माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर हम देखेंगे, तो that means there are the situations in the cardiac muscle, but they are in a irregular manner. Main thing, कार्डियक मसल में इसमें क्या है? कार्डियक मसल्स में इर्रेगुलर मैनर में ये सिट्रेशंस जो है, ये हमें दिखने लगते हैं when we go through the microscopic examination. But when it comes to the skeletal muscle, I have already told you कि skeletal muscle भी the skeletal muscle is also called the striated muscle because there are the striations present in them. तो that is why, लेकिन यहाँ पे क्या मैंने कहा है कि cardiac muscle is in the same way, cardiac muscle is also called the striated muscle because the striations of the two contractile filaments, light and dark band, actin and myosin contractile filaments, these two light and dark bands, the striations are there present in them also, but the striations in the cardiac muscle is in a regular manner, and the striations in skeletal muscle is in, and the striations in the cardiac muscle is in irregular manner, and the striations in skeletal muscle is in regular manner. Here is the main difference. After that, there is the size or the diameter of the cardiac muscle fibers. जो cardiac muscle fibers हैं, ये जो fibers हैं, cardiac muscle fibers हैं, इनका size क्या है? इन fibers का diameter का size क्या है? तो in case of the diameter, जो diameter है कार्डियक मसल सेल्स का, जो डायमीटर है, दैट इज इंटरमीडिएट।
और वी कैन से दैट इज द लार्ज डायमीटर। इन मसल सेल्स का डायमीटर जो है, इन मसल सेल्स मसल फाइबर्स का डायमीटर जो है दैट इज द लार्ज। लेकिन सबसे वेरी लार्ज जो है दैट इज इन द स्केलेटल मसल, स्मॉलेस्ट स्मूथ मसल में है, लेकिन कार्डियक मसल में इंटरमीडिएट, और वी कैन कम टू नो दैट वी कैन आल्सो से दैट इट इज लार्ज with 10 to 20 micrometer in diameter, 10 to 20 micrometer in diameter जो इनका साइज है। आफ्टर दैट अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल्स में जो कनेक्टिव टिश्यूज थे, डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज की कवरिंग थी। when we read about the structure of the skeletal muscle, जब हम पढ़ेंगे या जब हमने पढ़ा होगा तो उसमें पता चलता है कि वहां पे डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज की कवरिंग है, डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज का फ्रेमवर्क है वहां पे। लेकिन इन केस ऑफ द कार्डियक मसल, when it comes to the cardiac muscle, तो cardiac we see that there are the two connective tissue covering, there are the two connective tissue framework, जिस कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क ने, जिस कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट ने कार्डियक मसल को कवर किया है, एंड दे आर paramycium and endomycium. Means I mean to say cardiac muscle has got paramycium and endomycium connective tissue framework, connective tissue covering as a component of connective tissue. Let us see the position of the heart muscle. Heart muscle commonly it is we all know that the heart muscle is also called the myocardium. It is also called this muscle is also called the myocardium, and we will see the position of the heart muscle. We will see the position of this myocardium. हार्ट में, इस ऑर्गन में, इस हार्ट जो वाइटल ऑर्गन है, इसमें इस मायोकार्डियम, इस मसल की पोजीशन कहाँ पे है? तो फॉर दैट वी सी दैट देयर आर द टू सैक लाइक मेम्ब्रेन्स। इस हार्ट में सैक लाइक दो मेम्ब्रेन्स हैं और 3 लेयर्स हैं। एक तो 2 सैक लाइक मेम्ब्रेन्स हैं और दूसरा देयर आर द 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट 3 लेयर्स हैं, हार्ट के 3 लेयर्स हैं, राइट। और ये जो 2 सैक्स हैं, ये जो 2 सैक लाइक मेम्ब्रेन्स हैं जिसने हार्ट को इनक्लोज करके रखा है, दैट वी कॉल द पैराकार्डियम। इसको पैराकार्डियम बोलते हैं। What is paricardium? Paricardium, it is heart is enclosed by the 2 sac-like membranes. These 2 sac-like membranes are called the paricardium. और इस सैक्स में से जो आउटर सैक है, I will let you clear the position of the heart muscle with the help of the diagram. Again, I will make it. I will let you know these 2 sacs and the layers of the heart, and I have told you the position of the heart muscle. Ultimately, we will reach at the conclusion that is the position of the heart muscle. So for that, आप डायग्राम की ओर देखिए। जो पैराकार्डियम है, these are the 2 sac-like structures in the heart, and the heart is enclosed by these 2 sac-like membranes that we call the paricardium. इसमें let us see ये हार्ट है, सपोज इसमें क्या है, ये जो मैं बना रहा हूं आपको, ये वाली लेयर, ये आउटर लेयर है, आउटर सेक है। इस आउटर सेक को क्या कहते हैं? ये आउटर सेक है, ये आउटर लेयर है। सेक में सेक लाइक मेम्ब्रेन, ये वाला मेम्ब्रेन जो पढ़ा रहा हूं, ये आउटर सेक लाइक मेम्ब्रेन है। इसको क्या कहते हैं? इसको पैराटियल
पैराकार्डियम बोलते हैं। पैराटियल पैराकार्डियम। This outer layer, this outer membrane, which is the sac-like membrane present in the heart. There are the two membranes present in two sac-like membranes present in the heart, called the paricardium, enclosed the heart, and the outer sac-like membrane we call it paricardial pericardium. When it comes to the word पैराटियल, जब भी पैराटियल वर्ड आएगा तो आप याद रखिएगा कि पैराटियल मीन्स कि आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मेम्ब्रेन, सेक लाइक मेम्ब्रेन, जिसको पैराटियल पैराकार्डियम बोलते हैं। आफ्टर दैट जो सेकंड सेक है, ये दूसरा सेक है, सेक लाइक मेम्ब्रेन है। इसको मैं ये यहां पे बनाता हूं, ये वाला मेम्ब्रेन है। This is the second sac-like membrane, inner membrane है ये, inner sac-like membrane है ये, called visceral paricardium, or we can say that it is called the epicardium. ये visceral paricardium है। दिस इज द विसरल पैराकार्डियम, ये वाला मेम्ब्रेन, ये वाली लेयर जो है इट इज पैराटियल पैराकार्डियम, एंड द सेकंड इनर लेयर इन द हार्ट विच इज सेक लाइक स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल द विसरल पैराटियल पैराकार्डियम, और इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, दैट इज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, एपिकार्डियम। राइट, उसके बाद जो यहाँ पे ये राइट जो व्हाइट आपको दिख रहा है, व्हाइट गैप दिख रही है, द गैप बिटवीन द पैराटियल पैराकार्डियम एंड द विसरल पैराकार्डियम और एपिकार्डियम, देयर इज द गैप, एंड दिस गैप इज कॉल्ड द पैराकार्डियल कैविटी। इस गैप को, इस वाली गैप, ये जो गैप यहाँ पे बची ना, ये वाली गैप जो बची है व्हाइट वाली, ये दिस गैप इज कॉल्ड paracardial cavity. This is called the paricardial cavity. Sorry, paricardial cavity. This is the paricardial cavity. This paricardial cavity, this is the gap between the paratial pericardium and visceral pericardium. There is the gap between these two sac-like structures. This gap is called paricardial cavity. This is called the paricardial cavity. This paricardial cavity is filled with the fluid. ये एक fluid से fill किया हुआ होता है यहाँ पे, and this paricardial cavity which is filled with the fluid is very much important in the heart. Heart में बहुत जरूरी है, it plays very crucial role, it is vital, it has a massive role in the heart, because due to this paricardial cavity which is filled with the fluid, the heart, as I have already told you, as I have already told you that heart needs the muscle that can contract constantly, that can contract regularly, that can contract continuously, and that muscle is called the heart muscle. That muscle is called the myocardium. That muscle is called the myocardium, and this myocardium is the special muscle from rest of the muscles, because it has to work continuously, and this fluid, this पैराकार्डियल कैविटी जो है, जो बहुत ही जरूरी, जहाँ पे फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? बिकॉज आवर हार्ट वर्क्स फ्रिक्शनलेस एंड जर्कलेस। ड्यू टू दिस फ्लूइड, ड्यू टू दिस पैराकार्डियल कैविटी, हमारा जो हार्ट है इट वर्क्स फ्रिक्शनलेस। ड्यू टू दिस पैराकार्डियल कैविटी विच इज फिल्ड विद द फ्लूइड, our heart work is frictionless. Second, our heart work is jerkless. हमारा हार्ट जो काम कर रहा है थ्रू द लाइफ, कोई जर्क तो नहीं लग रही है ना, कोई फ्रिक्शनलेस तो काम कर रहा है ना, जर्कलेस तो काम कर रहा है ना।
jerkless and the frictionless working of the heart is due to the paracardial cavity, and this paracardial cavity is filled with the fluid, and this fluid it plays massive role in the heart in relation to its contraction, in relation to its constant contraction, in relation to its repeated and continuous contraction, right? After that, और ये जो ये epicardium है, this is the outer layer. Epicardium जो है, epicardium is one of the layer of paricardium. Paricardium की एक लेयर है. Epicardium जो है ये टू सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सेक लाइक मेम्ब्रेन्स हैं जो हार्ट में प्रेजेंट हैं. इन्हीं में से एक जिसको हमने बोला विसरल पैराकार्डियम, या इस पूरे को हम क्या कहेंगे, एपिकार्डियम. एपिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट. दिस इज द प्रोटेक्टिव सेक लाइक, दिस इज द प्रोटेक्टिव सेक कवरिंग, ये जिसने इंटायर मसल हार्ट मसल को कवर करके रखा है. एंड दिस एपिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग, राइट. एंड द सेकंड लेयर, इसको हम रब नहीं करेंगे बिकॉज पहले तो हमने एक लेयर पढ़ी है. एक तो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, सेक लाइक मेम्ब्रेन्स पढ़े हैं, दो है. उन दोनों में से ही एपिकार्डियम जो है जो आउटर लेयर है. तीन लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द थर्ड वन इज एंडोकार्डियम. दीज आर द थ्री लेयर्स ऑफ द हार्ट. तो सेक लाइक मेम्ब्रेन्स में से हमने एक पढ़ा है. उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सेकंड लेयर है. इसके बाद सेकंड लेयर जो आएगा ये सेकंड लेयर और मिडल लेयर. मिडल लेयर और सेकंड लेयर, इसको मायोकार्डियम कहते हैं. इस लेयर को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम. सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में से एक तो आउटर लेयर हमने पढ़ा. सेकंड लेयर जो है दैट इज आर द, वी कैन से दैट इज द मिडल लेयर. इट इज कॉल्ड द मायोकार्डियम. This myocardium, the main constituent of the heart, is the second layer. जो main constituent of the heart, and our major concern is the position of the heart muscle. इसी को हमने concern, यही हमारा concern है. तो for that मैंने ये चीजें in a sequence मैंने समझाने की कोशिश की है. Second layer जो है that is called the myocardium, and this myocardium constitute a main, the main constituent of the heart is the myocardium. Myocardium जो है ये middle layer है. It is the main layer जो है the main constituent of the heart, that is the second layer that we call the myocardium. जो myocardium है, myocardium is composed of cardiac muscle cells. ये जो मायोकार्डियम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल सेल्स. क्वेश्चन है व्हाई कार्डियक मसल इज आल्सो कॉल्ड मायोकार्डियम. बिकॉज जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ cardiac muscle cells, or we can say that cardiac myocytes. No doubt, there is no doubt कि अगर हम ये भी कहेंगे cardiac myocytes. Why cardiac myocytes? Because इस मसल के फर्स्ट लेक्चर में, जो मसल का फर्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया है, उसमें से मैंने बताया है जो मायोसाइट्स हैं. मायोसाइट्स आर कॉल्ड द फाइबर्स सेल्स या fibers. That is why undoubtedly we can come to know that the heart muscle myocardium is composed of the heart muscle cells, or myocardium is composed of the cardiac myocytes. That's why it is called the myocardium, and it
Workers, it is the special muscle. And one more thing is here. Here I want to add that it is the special muscle which is distinguished from rest of the muscles, as it has to work throughout the life, as it has to work constantly, as it has to work repeatedly, it has to work regularly. That is why it is called the myocardium. It is the special muscle from rest of the muscles. After that, the third layer, which is called the inner layer. मैं आपको पोजीशन पढ़ रहा हूं हार्ट मसल की. एंड लास्ट जो है, ये वाला लेयर जो है, ये वाली जो लास्ट लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम. It is the inner layer. Endocardium जो है, it is the inner layer of the heart. After that, after that, there we see the regulatory protein for contraction. कंट्रैक्शन के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ द कंट्रैक्शन, रेगुलेटरी प्रोटीन कौन है कार्डियक मसल्स में? कार्डियक मसल्स में ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. जिस तरह स्केलेटल मसल्स में ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन फॉर कंट्रैक्शन है, लाइकवाइज कार्डियक मसल्स में भी ट्रोपोनिन and tropomyosin as a regulatory protein for contraction. After that, we will see the speed of contraction. Speed of contraction. The speed of the contraction in case of the cardiac muscle is slowest. It's moderate. मॉडरेट स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है इसकी, बिकॉज इसने काम करना है, कंटिन्यूसली काम करना है. इसने काम करना छोड़ दिया तो खलास, सब कुछ खत्म. तो दैट इज वाई इसकी कंट्रैक्शन जो है, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन जो है, दैट इज द मॉडरेट. One more thing we will see, that is the type of control. Type of control in case of the cardiac muscle, that is involuntary in nature. Unlike skeletal muscle, there we see the type of control is the voluntary. वहां पे वॉलेंट्री टाइप ऑफ कंट्रोल है. लेकिन लाइकवाइज द स्मूथ मसल हैज इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ कंट्रोल, बिकॉज इन द सेम वे जो टाइप ऑफ कंट्रोल इन केस ऑफ कार्डियक मसल है, ये भी इनवॉलेंट्री है. दिस कार्डियक मसल इज आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल, बिकॉज दिस मसल इज गवर्नड बाय द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. राइट. उसके बाद जो है, जो कार्डियक मसल सेल्स हैं, cardiac muscle cells, they are not initiated by impulse.
देखो, अगर हम कंट्रैक्शन की बात करेंगे तो कंट्रैक्शन में यूजुअली वी ऑल नो दैट कि एक्शन पोटेंशियल जो कंडक्ट होता है, जो जनरेट एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है, बाकी मसल्स की बात कर रहा हूं, जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है, ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है, यहां पे ये मसल है फॉर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल ये मसल है, यहां पे एक्शन, ये नर्व इंपल्स आ जाता है यहां से, तो ये नर्व इंपल्स कम्युनिकेट करता है मसल को, तो तब जाके क्या होता है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है अलॉन्ग विद द मोटर न्यूरॉन, जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है, आफ्टर दैट वहां पे मसल जो है तो वो कंट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ द कार्डियक मसल में ये टोटली डिफरेंट है। कार्डियक मसल्स में जो इम्पल्स जो है वो इनिशिएट, जो कार्डियक मसल्स में जो इम्पल्स है दे आर नॉट रिसीव्ड फ्रॉम नर्वस सिस्टम। जो ये नर्व इम्पल्स जो आ जाती है, ये नर्व इम्पल्स से आ जाता है इन अदर मसल्स में, इन स्केलेटल, इनके साथ स्केलेटल मसल। लेकिन अगर हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स में जो नर्व इम्पल्स जो होता है, जो इम्पल्स जो आता है वो नर्वस सिस्टम से इम्पल्स नहीं आता है। कार्डियक मसल्स आर नॉट इनिशिएटेड बाय द इम्पल्स से इनिशिएट नहीं होता है। इम्पल्स जो नर्वस सिस्टम से इम्पल्स आता है उससे कार्डियक मसल कम्युनिकेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कार्डियक मसल हैज स्पेशल कंडक्शन प्रोसेस। कार्डियक मसल में स्पेशल कंडक्शन प्रोसेस है। कार्डियक मसल जो है इट इटसेल्फ इनिशिएट्स, ये खुद ही इनिशिएट करता है। इम्पल्स जो है ये खुद ही इम्पल्स जो है वो इनिशिएट करता है। खुद इम्पल्स इनिशिएट जब करता है और उस इम्पल्स को फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये उस इम्पल्स जो है वो एक तो ये खुद इनिशिएट करता है, दूसरा वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, नर्व इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू कंट्रैक्ट इट्स सेल्स, ताकि इसके सेल्स जो है वो कंट्रैक्ट करें। ये खुद नर्व इम्पल्स जो है ये खुद वहां पे क्या करता है, ये इनिशिएट करता है। कैसे? ऑन द बेस ऑफ द साइनो एट्रियल नोड, SA, sinoatrial node. This sinoatrial node is also called the pacemaker of heart. ये हार्ट का पेसमेकर कहलाता है साइनोएट्रियल नोड। इस साइनोएट्रियल के नोड के बिहाफ पे जो क्या होता है, ये एक्चुअली इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है। ये इसी साइनोएट्रियल नोड से इम्पल्स, हार्ट जो है, हार्ट इम्पल्स क्या करता है, जनरेट करता है। हार्ट जो है इम्पल्स जनरेट करता है, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। और आफ्टर दैट अल्टीमेटली क्या होता है, इट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट। ये जो इम्पल्स जो है ultimately it reaches all parts of heart. This sinoatrial node, this impulse which which the heart generates itself on the base of sinoatrial node, which is called the pacemaker of the heart, and this impulse is generated on the base of the sinoatrial node, and then ultimately it reaches to all parts of the heart, and finally जो heart है वो contract करने लगता है। एंड इसकी कंट्रैक्शन जो, दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि इसकी स्पेशल कंडक्शन प्रोसेस रहती है, कंडक्शन प्रोसेस होती रहती है। कंडक्टिविटी जो होती है वो स्पेशल कंडक्टिविटी होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्ट muscle, this was all about the myocardium, this was all about the cardiac muscle, and it was among one of the type of the muscle that is the cardiac muscle. Hope कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा ये वाला लेक्चर।